there are few good hotels. Like if you talk about my hotel, I have one very dedicated area for the children where there is a carom board, there is a chess, ludo, pool table, and all these activities are there. Badminton court भी है जहाँ जिनके पास थोड़ी बड़ी जगह है ऐसा है लोग रखते हैं. Hospitality में जो है वो those who are really in उनके पास ये facilities है. But yes, I agree सबके पास नहीं होगी. But still जो है, but अब ये सारी situation मैम बिल्कुल change है. अभी इन सब चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है. अभी सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ हिमाचल में धर्मशाला में फुटफॉल्स इज द बिगेस्ट इशू नाउ. हमारे पास फुटफॉल नहीं है. अभी लोग जो हैं वो आना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह है. कोई भी आज का मैं आपको एग्जांपल देता हूं एंड आई थिंक इट इज़ वेरी रेलेवेंट हियर. मुझे मैक्लोडगंज से आना था फॉर दिस मीट. सुबह 9 बजे देखिए मैक्लोडगंज चौक इतना जाम से भरा हुआ है दैट आई हैड टू रिक्वेस्ट एसएचओ साहब के मुझे जो है वो टॉप पे पहुंचना है तो मेरी गाड़ी तो निकलवाओ किसी तरीके से. सो वो लगा के बड़ी मुश्किल से इधर दाएं बाएं करके जो है वो गाड़ी निकली है. सो हमारे यहाँ फुटफॉल्स की बहुत ज़बरदस्त कंसर्न है एंड आई एम श्योर विद द न्यू इनिशिएटिव्स वाली साहब और हमारे सुक्खू साहब सीएम साहब इनसे हमने बड़ी डिटेल मीटिंग की है. रिक्वेस्ट करी है कि ये जो 2-4 चीज़ें हैं कनेक्टिविटी को लेके और इन चीज़ों पे जो है हमें जो है वो इमीडिएट जो है उस पर रिलीफ चाहिए और इमीडिएट हमें उस पर सपोर्ट चाहिए. I would love to have more detailed interaction with the audience. Okay, but this young guy, I do not want to deprive a young guy of a question. Otherwise, by now there's an old saying: if looks could kill, all 3 of us would be dead by now. Okay, but one last question from you. Yeah. Before we all die, I think. Hello. Good afternoon, sir. So we are from School of Architecture, Nagrota, Bakwa, and currently we are studying hill architecture, and we are doing a design problem which is related to eco-resort. So I want to ask you, what is the difference that make a resort and eco-resort? I can explain because this is going to take a lot of time and it's running short of time. Maybe we can have a different discussions because most of them won't be interested in knowing deep in architecture. Yeah, so basically when you're talking about eco is like when you are considering the surroundings, like when you're designing, what is your basic concept? You have to see what are the surroundings, what are the things which can influence your design, and you are making something like he gave you the example of Bandhavgarh, that when somebody comes it kinds of gels with the nature and it gels with the surrounding. Okay. So that's very brief about, but I can tell you in detail separately. Amardeep will meet you separately. Amardeep, please. Sure. It's a School of Architecture, so definitely I would like to meet. Vineet has 30 seconds to add to that, and I'm timing you, Vineet. Okay, I must also share, for example, we just consulted on a hotel somewhere in Himachal, where they use this Rajasthani technique of mud walls. A lot of times I feel that our architects have forgotten what the British left behind in terms of Roshandans, in terms of verandas, or when you create space between the main wall and something else, because it cuts down on electricity bills, it cuts down on the heat factor, number one. We can have detailed discussions on this later on. The other point that I must share very end, because I said 30 seconds, is that I was going through the statistics on the Himachal tourism site, and I must share with you that the tourism site has improved a lot. In terms of the numbers, from 2013 to 2018 were glorious days for all of us. Right now, even though Kangra has the best infrastructure, the best airport in terms of regularity of airlines, in terms of connectivity, in terms of medical facilities, everything is going for this district. But I feel we must look at the numbers, because numbers in Kangra have really gone down in terms of tourism. I will request before we end up this, Bali sir to please. I am not going to take much time. Yeah, please. It is just going to, I'm just going to conclude with 2-3 things. Because it is a session on tourism, and while I was speaking, I did not really touch tourism so much because I thought it is a literature fest, but tourism definitely is a part of it. So I come from the background of tourism. That's my qualification also. I'm a hotel management, and then I worked with many hotels before I came back and made few here in Himachal. My parents also had a hotel when I was born. So, this industry has been very close to my heart somehow. I feel, coming to the point that I understand your pain,
And I understand when you are in any platform, you're going to talk about, the positive and also about the negative. But now to just conclude in a positive note that what we are doing is very important. If I don't conclude it that way, I think that the essence would be little different from what the spirit should be. See, in the tourism, that is the forte of the present government. The present government really wants to take tourism to different height. To have this, to say so, I want to also add that it is not only that we want to just make a bubble and then just create a bubble where we're just talking about it and not doing something. I feel that when there has to be a project, there has to be very substantial, organized, financially capable, and all the parameters has to be very stable. So what we are doing now, और मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूँ, हम लोगों ने ये सोचा है कि टूरिज्म को आगे बढ़ाना है और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सबसे पहली सोच है कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। एयरपोर्ट का विस्तार बहुत ही जरूरी चीज है। एयरपोर्ट बढ़ेगा, बड़ी फ्लाइट आएंगी तो जो आज 300, 400, 500, 600 आदमी आता है वही हजारों में तब्दील हो जाएगा। हजारों लोग जब आएंगे तो जो होटल है उसके अंदर काम बढ़ेगा और जो आपकी इस फ्लाइट की टिकट है वो और सस्ती होगी, टिकट साइज जो है वो बढ़ जाएगा। सो मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी पहल है गवर्नमेंट की और 2000 करोड़ रुपया इसके लिए अलग से रखा गया है और रात दिन इसके ऊपर काम हो। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है और ये सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया गया, इसके लिए गोल्फ कोर्सेज बनाने के लिए, वेलनेस स्पा बनाने के लिए, जू जो आपके इतने बड़े जू जिसके अंदर तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जू बनाने के लिए और वेलनेस स्पा जिसको आप यहाँ पे योगा के साथ और डिफरेंट थेरेपीज के साथ जोड़ेंगे, इंटरनेशनल फाउंटेन बनाने के लिए, आइस स्केटिंग रिंग बनाने के लिए, क्योंकि आप कुछ एडिशंस करेंगे, स्टे को बढ़ाएंगे, लोगों को और चीज देंगे, अम्यूजमेंट पार्क लेके आएंगे, कुछ एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे तभी बढ़ पाएगा। That is the only way you can increase it. So the government thought that we need to increase it. The first step was to increase the budget. क्योंकि अगर बजट छोटा होगा, टूरिज्म का बजट 50 करोड़ था, इस बजट को 500 करोड़ कर दिया गया। टूरिज्म का प्रोजेक्ट 2500 करोड़ का एडीबी का, एशियन विकास बैंक का जो 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो क्लियर हो गया और उसमें 1311 करोड़ रुपया पहली ट्रांच आ गई और पहली ट्रांच आने के मतलब है 1311 करोड़ रुपए तो अभी अगले 2-3 साल में लगेगा। तो ये सब चीजें आएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं। एयरबीएनबी को जिस तरह एयरबीएनबी है वैसे जो आपका ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है उसको किस तरह से करना है, होम स्टे को कैसे आपने बेहतरीन करना है, क्योंकि बहुत सारे होम स्टे में जुड़े हुए हैं, हजारों परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं जोड़ना है, लाइसेंस करना है, साइट्स के साथ जोड़ना है। सर यू वर क्वाइट आई एम थैंकफुल टू यू दैट आपने बोला कि वेबसाइट को अच्छा किया गया है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन वेबसाइट बेटर है, पर मुझे लगता है बहुत और काम करने की जरूरत है और आप लोगों की सर्विसेज लेने की जरूरत है। पर सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, सोच क्लियर है। आज तक जो इससे पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। 50 करोड़ के बजट को 500 करोड़ कर दिया गया। 2500 करोड़ आप समझते हैं कि इट इज सच अ बिग प्रोजेक्ट फॉर एनी स्टेट टू कम। सो इसको आपको करना है तो आप लोगों का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां आप लोगों के साथ सलाह लेंगे और आप लोग जो होटल एसोसिएशन से जुड़े हैं और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से पूरे देश में जुड़े हैं उनको करना है। मेरा सबसे पहला ध्याय और ये आखिरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा वो पहला ध्याय ये है कि मुझे गवर्नमेंट के जो होटल है 55 उन गवर्नमेंट के होटलों को मुझे बेहतरीन A1 करके 5 स्टार की तरह करके चलाना है ताकि सरकारी होटलों के अंदर वो सुविधाएं मिल पाए और सरकारी होटल को अच्छा बनाया जा सके। मेरा दूसरा ध्याय ये है कि प्राइवेट होटलों को सुविधाएं मिले ताकि वो और बेहतरीन कर पाए। और मैं आपको छोटा सा बताऊंगा, हमारा फार्म हाउस था, सबसे बड़ा होटल हम लेके आए हिमाचल का हायत रेजेंसी वहां पर और वहां पे सबसे बेहतरीन रिजॉर्ट खुलवाया। आज वहां पे 25-30 हजार से कमरा शुरू होता है और 1.5 लाख रुपए तक का कमरा है और जो ऑक्यूपेंसी है वो 80% है।
सबसे पहले वहां का कमरा बिकता है। तो कहीं ना कहीं लग्जरी टूरिज्म की भी यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे हर तरह का इको टूरिज्म की जगह है, लग्जरी टूरिज्म की जगह है, ट्रेडिशनल फूड की जगह है। और हमने बोटी धाम, क्योंकि बोटी बनाता है और धाम हम खिलाते हैं, बोटी बनाता ना धाम, धामा खिलाते हैं। तो टूरिज्म से बोटी धाम नादा रेस्टोरेंट शुरू करना लाया, ताकि टूरिज्म के होटलों के अंदर ट्रेडिशनल फूड जो है वो मिलना शुरू हो जाए। तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी सलाह बड़ी बेहतरीन है। एक और सेशन करेंगे जब हम बैठ पाएंगे और बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। On that positive note, folks, thank you so much for your time and your patience. I'm sure this Wonderland will be calling all of us very soon. Thank you. Thank you. Thank you. Just wait for a moment. I would like to request Mr. R.S. Bali, please present a token of love to the participant of this first session. हम चाहते थे बहुत अच्छी और बहुत सार्थक लंबी चर्चा चले, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं बांध करके रखता है। तो आपसे क्षमा भी चाहते हैं। टूरिज्म एक इतना बड़ा विषय है, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन है, और इसके ऊपर दिन भर भी चर्चा जो है वो अगर हम करें तो भी छोटी पड़ेगी। So I would like to request. मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, दे वुड लाइक टू ऑनर R.S. Bali. प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज तो आपका ऑनर बनता है सारा, आज तो सारा डाइस आपके पास है, सब आप ही को ये आपकी इनायत है। थैंक यू for next session. I would like to request Sunani Guleria Sharma with Siddharth ji, and the subject is storytelling through art and art forms.